Hi, good evening, everybody, and I'm Abhilash. I hope you are able to watch this stream. You're able to hear my audio, and you're able to see the video. Can somebody confirm me the same thing? Right. So, thank you for confirmation. Uh, you can use the YouTube live chat or the WhatsApp number, which you can see on the description, or I'll just in the banner below. You can reach out to us over this in the WhatsApp. So today's session is about, as you are aware, that this is the mains general studies mains session 3, where we are speaking about polity, we are speaking about society and constitution, this area as per our elevate mains program. And we are going to go through the analysis of what kind of questions that come. But before I go on the analysis of today's session, I would want you to uh, take note of few things, very very important. Firstly, as you are aware that recently on 19th July, uh, you had a internet outage, blue screen of death, and I'm sure many of the aspirants who are using Microsoft account would have suffered or seen things happening to them. Now, was this planned? What do you suggest? What do you think this happened that day? See, basically, I wanted to highlight this issue, saying that things are not in your control. Anything can happen at any time of the, but that doesn't mean you should create a panic around it or become a victim of the same thing. You have to figure out a way. If you are prepared enough, you will figure out a way. Counting today, we have around 60 days till 20th of September. And mind you, now these 60 days, if you are not writing, if you are not getting evaluated, if you are not creating your 100 words notes for the topics, you will find it, and only preparing through your brain, मुझे याद आ गया है, मुझे पॉइंटर्स पता है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, ऐसे ऐसे मैं लिख दूंगा. I'm telling you, you will find it very difficult to even come close to the performance you expect from your own self. You have to write, you have to just write. Today's session also is all about understanding what kind of pattern, what kind of questions comes, what from what area, what do they demand, what is the demand of the question, and what am I writing over there. If you are not able to get that skill up, it is going to be very difficult for you to get a decent score where you're when the interview score adds up to you, you are in the final list. So starting today's session, so in society what we see, salient features of Indian society, salient features, keyword C, diversity of India, role of women, women's organization, population and associated issues, poverty, developmental issues, urbanizations, their problems and their remedies, effects of globalization on Indian society, social empowerment, communalism, regionalism, and secularism. Now, all these aspects we have studied also in the part of the constitution, the democracy, the governance. We all work around it. So you have to have topics, these topics which are highlighted over there. The questions will come around, if you are able to have content ready for them, 100 words ready for them, you will be able to meet the demand once you know the demand of the question, and you'll be able to deliver. Coming to the, so this almost covers 75 to 85 marks in the paper. So if we see the analysis done for which area questions has come for what time,
the salient features of Indian society, diversity of India, social empowerment, communalism, regionalism, and secularism. Now, if you see these topics, where we can understand that क्या पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन आया है, growing feeling of regionalism is an important factor in the generation of demand for a separate state. Discuss. 10 मार्क का क्वेश्चन है. ये कह रहा है growing feeling of regionalism, that your feeling for your region is one of the most important factor which creates the demand for a separate state. 2013 में ये आया था. And if you see the fact that the Telangana state carving out that time was being done, so hence that became a very important part. The question says discuss. So you have to say whether yes or no at what factor. Now for that for you to understand, you'll have to see that in which in India, from all the states that have been forming, what are the states where regionalism is the aspect for creating a state? Is Jharkhand a part of regionalism, or Chhattisgarh part of regionalism, or Uttarakhand part of regionalism? What are the states which have been made in the recent times, or Telangana state is part of regionalism? You have to figure it out first of all, that what are the reasons why the recent states have been made, and how far, how true is that growing feeling of regionalism is an important factor or not an important factor for the demand of state, or is it about the development not reaching out to them, hence due to a large state, due to a large public governance structure, and missing out at the lot of gaps in providing governance. तो अगर स्टेट छोटा हो जाए या स्टेट ब्रेक हो जाए, then you can reach out to public more, or district carve out ho. Is that the factor? So you'll have to understand why the three states, new states, or last 3 4 states which has come, for what reason, and if they are meeting the questions. We have to discuss. So you have to say the factor yes or no, and that's it. Similarly, how do the Indian debates or secularism differ from the debates in the West? This question, अगर आप लक्ष्मीकांत में पढ़े होंगे सेकुलरिज्म टॉपिक, एक क्लियरली फुल पैराग्राफ दे रखा है अबाउट how India's secularism is different from debates in the West. So if you read that, that is how, what are the factors? What is positive secularism? What is negative secularism? Whether state has a religion or state doesn't have a religion, states accommodates all the religion or state accommodates no religion. You have to understand from these perspective, and a book like Lakshmikant will give a good picture. Now, what happens is most of the time when it comes to these topics, we speak about Lakshmikant, polity, this thing. But if you have done your basic NCRT in 11th class NCRT's Indian Society book, you will see that there are some good way in which they have mentioned about these aspects of Indian society. If you get a chance to read from that and create a note on it, that will be the simplest and very, very perfect note. Whereas if you have to just add on with a relevant example of today's time, which will make that statement of secularism, regionalism, casteism, whatever is the defined way, with a current example, that will make it more quality content. Similarly, on 2015, you'll see that around for 12.5 marks, question is the debate, the issue of whether and how contemporary movement for assertion of Dalit identity work towards annihilation of caste. Then it's about caste system, but annihilation of caste system. So you'll have to see whether
what are the contemporary movement, आपको उसको पता होना चाहिए. And you have to debate. When you the word says debate, you have to debate on both the side, whether for the argument and against the argument. 2015, a very straight question on diversity. Describe any four cultural elements of diversity in India and rate their relative significance in building a national identity. A very good question on Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar, despite having divergent approaches and strategies, had a common goal of amelioration of the downtrodden. Elucidate. Now, see the word elucidate is the key uh, part. So, if you remember the directive words of question, here we had mentioned when there is something called elucidate, you have to provide examples. You have to provide examples of what Mahatma Gandhi ji or Dr. B.R. Have Ambedkar ji have done in their approaches with examples. Once you do that, that will meet the demand of the question. ये स्लाइड को हमने शेयर भी किया हुआ था, तो यू कैन एक्चुअली create a table of these keywords and put it in front of your desk so that whenever you see a questions of main आप crack करोगे चाहता क्या है question, what is the demand of the question, what will I fulfill with what kind of information. So these are certain questions on the the analysis or the red box was what basically हमने categorize किया है कि वो किस part of the Indian society के किस area पे से question आया है, just to know the trend on what they're asking. So as mentioned that आप देख सकते हो कि right side में हमने diversity, communalism, unity, communalism, secularism, caste, secularism, unity, tradition, इन सब पे questions आ रहा है. You need to have your 100 words ready for them when it comes to uh, preparing for that. उसका सब syllabus sub topic is population and associated issues, poverty and development issues. Now you see that these development issues questions are mostly, you need to have your understanding of demography, certain economic, you need to have the projection data where you speak about data or put your questions supportive with the data or statistics. Only then you will be able to kind of meet the requirement of the question, okay, what you wanted to say, and you have a backing up data to deliver it. Again, these boxes mention that what are the uh, context on which the question has been framed and the topic they are coming from. Urbanization problems and remedies. On these category, the amount of questions which came. Effects of globalization on Indian society. Role of women and women's organization. तो उसमें देखिए द टॉपिक विच यू नीड टू बी प्रिपेयर अबाउट बायस, सेक्स रेशियो, फेमिनाइजेशन, वर्क, सेक्स रेशियो, मूवमेंट्स, challenges, empowerment, work. Now let us understand what has been the trend in the marks on which these questions have been coming. I'll take a 1 minute break. If you have any query or questions in your mind, let me know.
Yeah. So अंडरस्टैंडिंग कंटिन्यूइंग दी सेशन, अगर आप देखेंगे हमने मार्क्स वाइज जो हमारे कितने कैप्चर किए हैं वो रखा है. You'll see that the trends that to Indian society, diversity or social empowerment इस पे questions have been in a very good chunk manner from 2017 से 2022, in fact last 22-23 में भी. तो इसको तो हमें देखना ही है, ट्रेंड में आएगा, इसके क्वेश्चंस तो आएंगे ही. और किस किस करंट अफेयर के टॉपिक से ये सारी चीजें न्यूज में आती है एंड बिकम्स रेलेवेंट, वो भी आपको देखना पड़ेगा. बिकॉज मे बी डायरेक्ट क्वेश्चन आए, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको आ गए. क्वेश्चन आएगा एक न्यूज पे, करंट अफेयर के न्यूज पे, जिसपे रेलेवेंटली रेलेवेंटली रेलेवेंटिंग द इंडियन सोसाइटी फीचर्स पे बात हो रही होगी, या किसी के बड़े पर्सन के कमेंट पे जो इंडियन सोसाइटी की बात पे बात कर रहा होगा, उसको एज अ स्टेटमेंट दे के डिस्कस करने के लिए, कि डिबेट करने के लिए, कि कमेंट करने के लिए. तो उस पैटर्न से आएगा. इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी. सो मोस्टली जैसे क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन का स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको पता लगता है कि हाँ इसमें तो मुझे यही लिखना है. बट टू बी वेरी फ्रैंक, ऑलवेज ट्राई टू सी, वो इमेजिन और रिमेंबर कि ये क्वेश्चन आया ही क्यों है, इसमें क्या ऐसा करंट फैक्टर जुड़ा है जो ये क्वेश्चन भेज दिया उन्होंने. नॉट नेसेसरी कि खाली तुमको इजी बनाने के लिए भेज दिया हो. एक रीजन ये होगा कि ये क्यों बात हो रही है यूपीएससी सर्कल में या गवर्नमेंट सर्कल में. तो उसमें कुछ एलिमेंट जरूर ऐड हुआ होगा. अगर वो आपको याद आ जाता है, देन दैट्स अ बोनस पार्ट ऑफ इट. कि अगर इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, तो दिस topic is in news due to the amount of in the US is going to have its election, and UK also had its election this year. So the amount of people from Indian origin in the bureaucracy or in the politics of these two nations have increased in the past. So we see it as an Indian order, increase in Indian order. So आप ये these are the effect of globalization. So you have to see, और जितने भी ये ग्लोबल इलेक्शंस हुए हैं, यूरोप में हुए हैं, इटली में हुए हैं, यूरोप में इटली में हुए हैं, अभी फ्रांस में भी शायद से चल रहा है. सो यू हैव टू बी सीइंग दैट व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इंडियन origin people are making over there. That will, if you are able to recall and frame such data around that, that how many MPs are there of Indian origin in Canada, how many MPs are there of Indian origin in current government in UK, how many, what is the Indian origin people in US government. So those things will start making the same जो डेटा है ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़ी सी रिफ्रेश हो जाएगा, एंड इट विल बी वेरी वेरी रेलेवेंट एंड कंटेंट दैट विल इम्प्रेस द आंसर evaluator. So these are the trends. So going forward, like we see that these are the questions जिसमें almost हमें expect कर ही सकते हैं कि कुछ आएगा. So as a part of activity today is like, you please open up your 100 words for diversity of India, caste, joint family, women, globalization, urbanization, poverty, communalism, secularism, regionalism पे आप लिख के हमें बताइए. Coming to various topics which is there in the syllabus of polity, जो कि is in front of you. General Studies 2, Governance, Constitution, Polity, Social Justice and International Relations. Indian Constitution say historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure. Functions and responsibilities of the Union and the states, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of power and finances up to local levels and challenges there.
separation of powers between various organs, dispute redressal mechanism and institutions, comparison of the Indian constitutional scheme with that of other countries, parliament and state legislatures, structure, functioning, conduct of business, powers and privileges, and issues arising out of these. These things are in news due to current election. Because जहाँ पे स्टेट में भी इलेक्शन हुआ है और यूनियन में भी इलेक्शन हुआ है, these things have come, a lot of articles have come. Structure, organization, and functioning of the executive and the judiciary, ministries and department of the government, pressure groups and formal informal associations, and their role in the polity. Salient features of the Representation of People's Act, appointment to various constitutional posts, powers, functions, and responsibilities of various constitutional bodies, statutory, regulatory, and various quasi judicial bodies. तो अगर हमने for all the topic wise we've done an analysis that what kind of questions have been coming in the last 10 years और कौन से एरिया से आ रहा है, कौन से highlight area से आ रहा है. So you can see that questions have come from fundamental rights, Article 19, fundamental rights, Article 21, your rights, your deep directive principles of state policy, preamble से, fundamental rights से, emergency clause से, country wise comparison से, amendment act से, then constitutionalism से, and comparative with various country president से, cabinet से, anti-defection, parliamentary privileges, political parties, electoral reforms, Rajya Sabha, Representative of People Act, Parliamentary Committee, Speaker, Legislative Council, राज्य सभा, गवर्नर. तो ये सारे जो ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है स्टैटिक है, आपको साथ साथ याद रखना चाहिए. 4 लाइन हर चीज के बारे में, करंट में जो भी इस पे आता है, एंड क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं करंट के हिसाब से, जो न्यूज में आए हैं उसके हिसाब से. सेपरेशन ऑफ पावर, आर्टिकल फॉर स्टेट 371, लोकल अमेंडमेंट, फेडरलिज्म. तो ये सारे क्वेश्चंस मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ. दिस विल बी शेयर टू यू इन द डेक, विल बी शेयर्ड उस फोल्डर में वेयर विच वी हैव बीन शेयरिंग these. What I would, the reason for highlighting these words are, ये जो टॉपिक्स है राइट साइड में, आपको इसके बारे में प्रिपेयर्ड होके जाना है. और अगर आप प्रिपेयर्ड होके जाएंगे देन ओनली योर तैयारी है कि आपको इसमें से चांसेस है जो भी टॉपिक आएगा यू विल बी एबल टू राइट 100 words. दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट वर्ड्स. Okay, now I take a break. Any questions, please put it in the chat and let us. Yeah. ओके. हाँ जी, राइट. सो बेसिकली जो भी एनरोल्ड कैंडिडेट है, 1-on-1 आपको मैं, वी विल ब्रेक डाउन द क्वेश्चन एंड डू ऑल द क्वेश्चन. दैट इज 1-on-1 सेशन. यहाँ पे बिकॉज एज आई मेंशन दैट वी आर गोइंग बाय अ शेड्यूल, we are taking an overall analysis of the questions which has come and the topic which has come for you to start writing and submitting answers. Those who are writing mains, वो कृपया करके immediately, don't waste much time. क्वेश्चंस को पीआईक्यू को ही बेस बनाइए और उस पर आप क्वेश्चंस लिख के इवेलुएट करने के लिए भेजिए. मॉडल सर, मॉडल आंसर प्रोवाइड करने का काम इनफैक्ट टू बी वेरी फ्रैंक आपको इंटरनेट में मिल जाएगा अगर देखा जाएगा. बट मेरा ये मानना है मॉडल आंसर्स की तरफ अगर आप जाते हो देन यू वुड वांट टू रेप्लिकेट देम, बट एग्जैक्टली ये इज नॉट द नीड. द स्किल विल ओनली कम अगर आप अपने ब्रेन से रिकॉल करके
या उस किस एरिया से आया है, किस सिलेबस से आया है, उसकी तरफ जाके अगर आप प्रिपेयर करके लिख पाए तो ही आप एग्जाम डे के दिन भी लिख पाओगे। मॉडल आंसर को याद करोगे स्कूल के तरह कोई गाइड बुक से निकला हुआ, ऐसा ज्यादा इम्पैक्टफुल तो उससे होगा नहीं। और सब याद करने के चक्कर में बहुत बड़ा डर ये रहता है कि क्या याद नहीं हो पाया, उसके बारे में टेंशन आता है, और आता आता चीज में नहीं आता है। तो इट इज नॉट अबाउट remembering model answers. It is about writing your answers that they become the model answers for all. तो उस तरफ अपना फोकस मत रखिए अभी। आई नो इन द मार्केट देयर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल। लगता है ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट करने वालों को कि वहां से मैं याद कर लूंगा, इस किताब से सब कुछ लिखा हुआ है, उसी को याद कर लूंगा। बट लेट मी टेल यू दैट वो भी एक ऐप की तरह ही किसी एस्पिरेंट नहीं लिखा है। यूपीएससी कोई मॉडल आंसर नहीं लिख रहा है। तो आपको आंसर बिल्कुल रेलेवेंट, क्वेश्चन पुराना हो सकता है बट आंसर उसका आज के डिमांड और आज के एग्जांपल्स के साथ उसको रेलेवेंट बनाया जा सकता है। ओके, कमिंग बैक टू आवर सेशन। जी, while I have highlighted this, the PPT will be available for you to access. So you can, your analysis is already done, so you may not take much time. You can just highlight on the areas which has come uh, in that. My only intention over here is you start writing. Please start writing and submitting. We will be soon, स्पेशली वन टू वन मेंटरिंग जैसे कराना है ना आपको। देखो ऐसा है कि आपको हमें भी टाइम देना पड़ेगा। इफ यू जस्ट कम फॉर इन द नेम ऑफ मेंटरिंग एंड हमें भी टाइम ना दो, और ऐसा कुछ मैजिकल है नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। इट इज ऑल अबाउट हाउ रेडी, हाउ वी सी कहाँ आपका नॉलेज गैप आता है, और हाउ इन अ स्टिपुलेटेड टाइम वी कैन हेल्प। बट इफ यू डोंट गिव अ टाइम देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और एज आई मेंशन, माय मेंटरशिप इज ऑल अबाउट क्या आप राइटिंग करके देखते हो। आप मुझे फेस में बहुत कन्विंस करा दो, सर बहुत मैं कर लूंगा, सर ये मैं हो जाएगा, मेरे से हो जाएगा, दैट डजंट वर्क आउट। आई डोंट एक्सेप्ट और आई वुड नॉट अग्री ऑन दैट। मैंने जो लिखा निकलेगा लिखा, आपने लिख के दिखा दिया तो मतलब हुआ है। नहीं लिखा, कोई भी रीजन आ जाए, कुछ भी रीजन आए, टाइम भी नहीं है, तो भी मैं अपने अंदर से तो मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा कि हुआ है कि नहीं। इट इज ऑल अबाउट राइटिंग एंड गेटिंग इट इवेलुएटेड एंड राइटिंग इट बेटर। तो ये सारे क्वेश्चंस कुछ आए हैं जो पिछले 10 सालों में आए हैं इन ई गवर्नेंस एंड चार्टर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। So you can just read through them, create a note around it, or while we do one-on-one session, we will go each question by question and understand what kind of demand it will meet. तो अगर आप ट्रेंड वाइज भी देखें तो वेलफेयर स्कीम्स आर ऑलवेज इन एक आता ही है क्वेश्चन उस पे, और सोशल सेक्टर पे क्वेश्चन आता ही है, एंड दिस विल स्टे। एंड मोस्टली डेवलपमेंट सेक्टरल क्वेश्चन जो है उस पर भी आता ही है। तो दीज विल स्टे एंड दीज विल कम। एंड करंट ईयर में अगर आप देखोगे तो विद द इलेक्शन ईयर हैपनिंग, लॉट ऑफ स्टेक होल्डर इन द गवर्नेंस और mechanism of democracy have shown their presence in the election years. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड इट्स बीइंग डिबेटेड, इट्स बीइंग डिस्कस्ड, और वो चीज़ आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या अगर सरकार काम करती है और फिर भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट वापस नहीं आती, तो व्हाट इज द रीजन, हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, ऑल दैट थिंग। विद दिस we will close the session of the day, and I would urge you all to write as much as possible. बहुत कम अपने आप को प्रेशर में डालिए लिखने के लिए, हाथ बहुत दर्द करेगा, मैं कह रहा हूँ। कौन सा पेन है, आपको एक पेन के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, वही पेन से चलेगा, वही आपका अस्त्र होगा, आपको चूज करना पड़ेगा आज से ही, और बहुत सारा लिखना पड़ेगा, बहुत सारे ए4 शीट्स में लिखने पड़ेंगे। आपको वो मेहनत जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको फील नहीं आएगी आप प्रिपेयर कर रहे हैं। आप बड़े बड़े राउंड में डायग्राम कर लें, आप बड़ा बड़ा पॉइंटर्स लिख लें,
इट्स फाइन, बट अगर आप 7 मिनट और 11 मिनट में आंसर्स नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप पेपर नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो मेजर काम हमारा पेपर पूरा करना है विद क्वालिटेटिव आंसर्स, राइटिंग अ 10 मार्क्स क्वेश्चन इन 7 मिनट्स एंड राइटिंग अ 15 मार्क्स क्वेश्चन इन 11 मिनट्स। वो ऑब्जेक्टिव हमें देखना है। तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग एंड सबमिटिंग इन रेस्पेक्टिव। आज हमने इस सेशन पे किया, लेकिन अगर आप अपने कैलेंडर के हिसाब से आगे कुछ भी कर रहे हैं जीएस पेपर का, आप सबमिट करिए। डोंट लुक फॉर कि नहीं करा है हमने तो आप अभी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप करते रहिए सबमिट, यू विल गेट इवैल्यूएटेड फॉर ऑल, and in your one-on-one counseling we will go by the questions and breaking it for the entire PYQs. With that, we will close the session for the day and have a great evening. uh, Please gear up, 2 months more to go. All the best.